myself, dietitian Suksabia from Midas. Today I am going to discuss about a very interesting topic about how can we keep our skin healthy and glowing. It is very important nowadays to have a healthy skin. आजकल सभी को अच्छी स्किन चाहिए, स्किन से ही पता चलता है कि हमारी हेल्थ कितनी ही अच्छी है। तो कुछ बातें को ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने लाइफस्टाइल और अपने फूड हैबिट्स में चेंजेस करके अपनी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं। Yes, the first point is very common snacks is French fries. French fries is what we eat and we give to our children also. It is nowadays ready to cook. It is very easily available. But इसके काफी नुकसान भी हैं, जैसे कि it is fried. French fries are deep fried, so it can lead to obesity. Not only it can lead to obesity, बल्कि हमारे स्किन में डिहाइड्रेशन भी करता है, जिसकी वजह से रिंकल्स और एक्ने प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। This can be replaced by a very easily available snack that is sweet potato. Sweet potato is not only tasty, it is very healthy too. Sweet potato contains copper into it, which improves the skin quality. The next point is white bread. White bread is very commonly used in snacking and in everyday's life. We used it in making sandwiches and other purposes. It is not good for health, not at all, not for skin at least, because it is made up of refined wheat. So this can lead to skin inflammation as well as it can lead to glycemic index. Our glycemic index, हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. So this can be replaced by multigrain breads. जब भी हम ब्रेड खरीदे हमें जरूर देखना है कि वो कौन सी ग्रेन से बनी है और ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर कितनी शुगर है. Yes, breads do have sugar into it. नेक्स्ट इज शुगर इटसेल्फ. हमें किस तरह की शुगर यूज करनी चाहिए जब हम अपना खाना बनाते हैं या जब भी कोई हम स्वीट डिश बनाते हैं या एवरीडे लाइफ के लिए. व्हाइट शुगर वर्सेस हनी एंड फ्रूट्स. जितना कम हो सके हमें व्हाइट शुगर यूज करनी चाहिए बिकॉज इट इज ऑल्सो रिफाइंड. ये हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है और उसकी वजह से हमें अगेन दिक्कत आ सकती है स्किन रिंकल्स, स्किन डिहाइड्रेशन and skin inflammation की. So it can be replaced by good quality honey or fruits. Whenever we crave for sugary snacks, we should go for fruits. Fruits are the best option. It is rich in vitamins and minerals as well as the sugar itself. जो sugar fruits के अंदर होती है वो it is very well digested and it is tasty too. Next is butter. क्या use करें cooking के लिए? Butter, olive oil. Look, when we use butter in excess, it depletes our skin. So, excess amount of butter should not be used. It can be replaced by olive oil or avocado oil. Avocado oil, if it is not available at home, so we can replace it with olive oil also. Virgin olive oil is very good source of antioxidants too. Next is very important, especially for non-vegetarians. What quality of meat they should use? हम आम तौर पे स्नैकिंग के लिए यूज करते हैं सीक, सॉसेज और वी पुट देम इन हॉट डॉग्स. बट इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? ऑल्दो इट इज प्रोसेस्ड, जो भी फूड प्रोसेस्ड होता है दैट इज हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, इन सोडियम एंड इन सल्फाइड. सल्फाइड उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है जिसकी वजह से स्किन में डिहाइड्रेशन और इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम आती है एंड दिस कैन लीड टू स्किन रिंकल्स और स्किन की एजिंग ज्यादा हो जाती है. सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय लीन मीट्स. जब भी हमें स्नैकिंग करनी है फॉर नॉन वेज फूड इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय लीन मीट्स जैसे कि चिकन, फिश. वी शुड प्रेफर दिस रादर देन अदर मीट्स. नेक्स्ट इज डेयरी प्रोडक्ट. व्हाट टाइप एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट शुड बी यूज. और डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी क्या खामियां हैं? दूध पीने से तो स्किन अच्छी होती है, दूध पी के गोरे हो जाते हैं, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम हाई फैट मिल्क ना पिए. हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स कैन लीड टू स्किन एजिंग टू. जब भी हम दूध पिए उसे टोंड पिए या आलमंड मिल्क. आलमंड मिल्क इज वन ऑफ द वेरी गुड मिल्क रिप्लेसमेंट. इट कैन प्रिवेंट द प्रीमेच्योर स्किन एजिंग टू. सो इट इज वेरी टेस्टी एंड हाइजेनिक. दिस कैन बी ऑल्सो रिप्लेस्ड. और कैल्शियम के लिए वी कैन ऑल्सो यूज वेजिटेबल्स, रिच कैल्शियम रिच वेजिटेबल्स like beans, green leafy vegetables, etc. Next is very common. जब हम स्नैकिंग करने जाते हैं we use सोडा और कैफीन. या तो हम कोल्ड कॉफी पीते हैं या तो हम सोडा बेवरेजेस लेते हैं या हम हॉट टी लेते हैं. सो व्हाट शुड वी यूज, व्हाट शुड वी चूज? इसमें से क्या बेटर है, सोडा और कैफीन?
सोडा एंड कैफीन बोथ हैम्पर आवर स्लीपिंग पैटर्न्स। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो हमारी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे जो कि है डार्क सर्कल्स। सो दिस कैन लीड टू कोलेजन ब्रेकडाउन एज वेल एज डार्क सर्कल्स, जो किसी को भी पसंद नहीं है। सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय आइदर फ्रेश लाइम or other drinking beverages, or it can be replaced by juices. So soda and caffeine should be avoided as much as possible. Next point is alcohol. Alcohol की amount चाहे हम ज़्यादा लें चाहे कम, it will not able to absorb vitamin A. विटामिन ए की बहुत खासियत है हमारे स्किन में, इसी की वजह से न्यू सेल्स डेवलप होते हैं। तो अगर हम अल्कोहल पी रहे हैं तो हमारी स्किन कभी हेल्दी नहीं रह सकती, बिकॉज इट हैम्पर्स द विटामिन ए एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। Next is snacking or munching. We generally munch potato chips or these type of wafers when we sit and watch a movie. तो हमें ऐसे टाइम पे क्या मंच करना चाहिए? मन तो सबका करता है कि चिप्स खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिएं, but this can be replaced with healthy food. तो we should use chickpea, white चना, boiled white चना, इसके अंदर इमली की चटनी डाल के और इसके अंदर बहुत सारा सैलेड डाल के this can be made very delicious and healthy. So this is one of the major replacement we can do, or we can use sprouts. We can also use corns. Sweet corns are also very healthy and this is good for our skin too. Next we can use is bell pepper with hummus. We all love hummus and hummus is very healthy. So bell pepper combined with hummus will lead you very healthy and glowing skin. So these were few tips and tricks we can make changes in our lifestyle and in our nature to how to choose or what to pick up to make our skin healthy, glowing and anti-aging.